NGC2 control, event number 428 completed. Roger. Calling COT, confirm all radars are off. 2 minutes, man. COT to TCDC, all radar pulses are off. And ready for checks. Okay. Calling SHAR-1 and 2, confirm your readiness to receive M1 and TM2. SHAR-1 and 2 ready to receive telemetry carriers. Noted. Umbilical venting commenced. Calling PSC, PSC can switch on PSBTs and SCBTs. All stations note event number 405 and 407 TCDC, completed. SHAR-1 and 2 observers, both telemetry carriers are on. Noted. PSC to control, event number 420, 421, 422 and 423 completed. Roger. Good afternoon and a hearty welcome to all the viewers. I am Madhuri, welcoming you all to the launch event of PSLV C49 EOS-01 mission being telecast live on DD National from Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, Andhra Pradesh, the spaceport of India. नमस्कार, मैं विकास स्वर्णकार NGC at SHAR. यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार श्रीहरिकोटा से PSLV C49 EOS-1 मिशन का सीधे प्रसारण में जुड़े आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए हमारे साथ इस सफर के भागीदार बनिए। हम समय समय पर आपको यान से जुड़ी हुई सभी घटनाओं का विवरण देते रहेंगे। आज 7 नवंबर 2020 को भारत मानक समय के अनुसार दोपहर 3:02 पर PSLV C49 SDSC शार के प्रथम प्रमोचन मंच यानी FLP से होने जा रहा है। यह यान PSLV का 51वां प्रमोचन है। इसमें मुख्य भारतीय उपग्रह EOS-1 के साथ 9 अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह
साथ में सफर कर रहे हैं। Just 5 kilometers इनका north नाम of Shar region we have R2 Tataram and it is लिथुआनिया से so T-20 चार minutes will उपग्रह begin the briefing. लग्जमबर्ग के, जिनका नाम है KSM-1A, 1B, 1C और 1D। इसके अलावा 4 यूएस के सैटेलाइट्स हैं जिनके नाम हैं लेमूर 1, 2, 3, 4 क्रमशः। जैसा कि आप जानते होंगे, आज भारत के पास सबसे बड़ी संख्या में प्रचालनरत सुदूर संवेदनशील उपग्रहों का समूह है। Just near to the Shar EOS-1 भी एक भूप्रेक्षण उपग्रह है जिसका उद्देश्य मिशन होगा कृषि, पर्यावरण, वानिकी और आपदा प्रबंधन में सहयोग देना। इस उपग्रह का कुल भार करीब 623 केजी का होगा और इसे 575 किलोमीटर की 37 डिग्री झुकाव के साथ वृत्ताकार कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। Control to note, event number 436 The completed. launch will take place today, the 7th of November 2020 at 15:02 hours Indian Standard Time from the first launch pad. In addition to the DD National, this live telecast is going also to the ISRO internal network, ISRO internet website, YouTube, Facebook and Twitter. The PSLV C-49 launch Calling P1, P1 का with EOS-1 as the primary satellite weighing 630 kg in this 575 kilometer circular orbit with 36.9 degrees inclination and 9 other international co-passenger satellites, R2 from Lithuania, 4 numbers of Cleo satellites belonging to Luxembourg, 4 numbers of Lemur satellites belonging to the USA. These foreign satellites are being launched under a commercial agreement with the New Space India Limited, NSIL, which is a commercial arm of ISRO. The PSLV C-49 being launched today is the PSLV DEL version of reliable and versatile PSLV. It has 2 strap-ons along with the core motor. This is the 51st flight of PSLV and second for PSLV DL version. The first flight of PSLV DL was PSLV C-44 that launched successfully on 24th of January 2019. अब मैं आपको मिशन से संबंधी कुछ प्रमुख बातें इस प्रमोचन यान के लिए बताना चाहता हूं। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का 76वां मिशन है। Roger. यह प्रथम प्रमोचन मंच FLP से 38वां मिशन है और सामान्य PSLV जिसे हम PSLV XL के नाम से जानते हैं, उसमें 6 बूस्टर्स, स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, लेकिन इस बार PSLV DL संरचना का प्रयोग किया जा रहा है। इस संरचना में 2 ठोस नोदन प्रणाली वाले स्ट्रैप-ऑन बूस्टर मेन बूस्टर के साथ संलग्न होते हैं। इससे पहले इस संरचना का प्रयोग PSLV C-44 में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। The launch campaign for PSLV C-49 had begun on 29th of January 2020 and continued till 12th of March for the assembly of PS3-PS4 module. Thereafter, the launch vehicle was kept in preservation mode due to the COVID crisis. The equipment bay was specially kept in conditioned environment. Rest of the vehicle was regularly being inspected until the resumption of activities. The satellite assembly and heat shield assembly were carried out in the end of October. Now the launch vehicle is fully ready. It is prepared for the launch. The countdown has begun T-minus 26 hours, that is 26 hours before the scheduled launch time. The liquid propellants have been filled, gas bottles have been pressurized, and batteries have been charged. In the past 1 hour, topping up is in progress. जी हाँ, अब हम प्रमोचन से करीबन 25 मिनट की दूरी पर, जैसा कि माधुरी ने भी बताया, हम
काउंटडाउन जो कि प्रमोशन की उल्टी गिनती T-26 आवर्स पहले शुरू हो चुकी है और इस दौरान करीब 580 गतिविधियां प्रमोशन के लिए की जानी हैं, जो कि अभी भी जारी है। इस दौरान सभी तरल प्रणोदक चरणों का भराव और उचित दबाव सभी सुनिश्चित किया जा रहा है, परीक्षित किया जा रहा है। इसके साथ ही बैटरीज ये सब पावर ऑन हो चुकी हैं और पायरो आर्म्स अब आर्म मोड पे किए जा रहे हैं। इन सब का निरीक्षण यहाँ बैठे वैज्ञानिक अभियंता अपने कंसोल पर करते हुए। These are the visuals from the Mission Control Center where the scientists are very eagerly and curiously taking the parameters of the launch vehicle and the satellite. Here you can see the PSLV C-49 at the first launch pad. Here at Sriharikota the weather is rainy and NGC can stop storage. जी, ये समय शार के लिए रिटर्न मॉनसून का होता है, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रिट्रीट होता है और चेन्नई के आसपास ये सभी जगह मॉनसून देखते हैं और ये हमारे यहाँ बारिश का समय है। On your screens now is Chairman ISRO and Secretary DOS Dr. K. Shivan. Sitting next to him is Director VSSE Sri S. Somnath and Director URSC Sri P. Kunikrishnan. The senior scientists of SDSC Shah Sriharikota. 438 and 439 completed. Roger. PYC to control event 440 completed. The prevailing COVID situation in India and all over the world has made the launch activity a very austere one, which is otherwise festive, with the presence of teams of scientists and technocrats from other centers of ISRO. The management is making appropriate arrangements for the health of individuals and smooth continuation of launch operations. The workplace follows SOP with man limit and social distancing. A new normal has been exercised this time, that the Launch Control Center data at Sriharikota are made available at all the remote centers of ISRO. This arrangement has limited the gathering of scientists from other centers to SDSC Shar so as to follow Control to note event number 442, 446. Using this development, all launch vehicle and satellite related checks were completed successfully. Now we take you to the sequence of launch vehicle activities. TCTC, Shar 1 and 2 confirm sonar. Here you can see the launch vehicle core based shroud and nozzle end segment being brought to the launch pad and lifted and precisely positioned on the launch pedestal. So change over to channel 2 at T-20. The PS1 consists of 5 segments of case bonded solid propellant, which is being integrated at the launch pad. Roger. After the first segment, this is the middle segment of the PS1. One by one, 5 segments of PS1 are joined to build up the full motor. Then the igniter assembly will be taking place. Here you can see the positioning of MS2, then the MS3 and HES. Here the last segment of the PS1 motor has been assembled. The PSLV DL version comes with 2 strap-ons which are being integrated to the core motor. Here you can see the first strap-on being tilted, hoisted up with a facility crane, being precisely lowered and joined to the core motor. These are the visuals of PS2 second stage. Roger. जी हाँ, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, PS2 को पूरी तरह
20 minutes. संयोजित कर All परीक्षित stations कर to लॉन्च change पैड over ले to आया जा channel चुका है और अब उसे Event number संयोजित किया जा रहा है 448, PS1 on internal प्रथम battery. चरण के साथ और ये विजुअल है PS3 और PS4 के संयोजित स्ट्रक्चर Event का। number 449 completed. अब इसे भी संयोजित किया जा रहा है AU in ALS mode. लॉन्च व्हीकल के साथ और इधर आप देख पा रहे हैं EOS-1 सैटेलाइट जिसे कि पेलोड एडेप्टर पर संयोजित किया जा रहा है। यह काम बहुत ही सतर्कता पूर्वक यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है और अब एनकैप्सुलेटेड इसे यहाँ लाया गया लॉन्च पैड पर और इसे PS4 के ऊपर में संयोजित कर दिया गया। यहाँ आप देख पा रहे हैं कस्टमर सैटेलाइट्स जिसे PS4 के साथ में संलग्न किया गया और अब हीट शील्ड के अंदर जो कि ऊष्मा कवच है उसके अंदर सैटेलाइट्स को रख दिया गया है और ये जो नीले कलर की बिल्डिंग आप देख रहे थे इसे MST कहते हैं, मोबाइल सर्विस टावर। इसे करीब 100 मीटर की दूरी पर पीछे खसका दिया जाता है। रॉकेट के तैयार होने के पश्चात इसे 100 मीटर तक पीछे कर देते हैं। Telecommand and all electronic instrumented systems are ready for PSLV C49 launch. As I told, it's a rainy day here in Sriharikota. Mission computers and real-time network are ready for PSLV C49 EOS-01 mission. Roger. RS-4 to ROD, range safety systems are ready for PSLV C49 launch. यहाँ अभी बारिश कुछ तेज होती हुई। PNC to TTC director. Dispatch stations confirm readiness for Mission Control Center from Sriharikota. We are bringing this telecast live to you on DD National. Minus 18 minutes. Control to note, event number 460 completed. From time to time, we will bring you the events happening here at the launch pad. 470 completed. जी हाँ, अभी T-17 मिनट्स 44 सेकंड्स की दूरी पर हम प्रमोशन से यहाँ की गतिविधियों पर बाकायदा नजर रखे हुए सभी इंजीनियर्स। Director to Mission Director. All the system parameters of PSLV C49 launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV C49 EOS-01 mission. Is ROD to mission control. Go ahead. Control standby. PSLV C49 का लॉन्च आज This is ROD to mission control. होने वाला है। Please hold the time for planned 5 minutes in the next full minute. Control calling timing. Please go ahead. Hold the countdown time. Timing, Roger. Next planned 5 minutes in next full minute. Number 475, spacecraft director confirms spacecraft readiness to mission director. SDS servers activated. MC confirms reception of Control calling timing. data. Timing, please go ahead. Timing, hold the countdown time is planned. Next 5 minutes is planned. So next full minute. Timing, Roger. Timing, please hold at T-15 minutes. Timing noted.
यान को तब परेशानी हो सकती है अगर कुछ लाइटनिंग स्ट्राइक हो गई, तब इसमें जो बैठे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इस चीज़ की पूरी जानकारी लेने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि प्रमोशन किस समय होना है। This is the countdown time being held at T-minus 15 minutes and there is a hold. चलिए, इस बीच हम आपको PSLV के प्रमोशन यान से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, PSLV भारत का एक विश्वसनीय, प्रमाणित और बहुमुखी संरचना वाला प्रमोशन यान है। PSLV एक प्रत्यावर्ती ठोस व तरल प्रणोदन वाला यान है। मतलब इसके पहले चरण पे ठोस, फिर तरल, फिर ठोस और फिर तरल चरण होते हैं। इसका कुल अवधि करीब 1200 सेकंड की होती है। इस बार हम PSLV DL संरचना का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी नितभार क्षमता 1257 kg की 600 किलोमीटर तक की कक्षा में प्रक्षेपित करने की होती है। इस संरचना में प्रथम चरण में एक ठोस बूस्टर होता है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर कहलाता है। उसका भार करीबन 139 टन होता है और इसके साथ 2 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर 12 टन के ठोस नोदन प्रणाली में कार्य करने वाले संलग्न होते हैं। इसकी लंबाई करीबन 20 मीटर की और व्यास 2.8 मीटर का होता है। यह HTPV पर आधारित ठोस प्रणोदन प्रणाली में कार्य करता है। इसकी क्रिया काल करीब 107 सेकंड की होती है। इसके बाद दूसरा चरण एक तरल नोदन प्रणाली पर कार्य करने वाला चरण है। इसमें स्वदेशी तकनीक से विकसित विकास इंजन का इस्तेमाल होता है, जो कि विश्वसनीयता और प्रामाणिकता के लिए जाना जाता है। दूसरे चरण की लंबाई करीबन 12.8 मीटर और व्यास 2.8 मीटर का होता है। इसमें जो प्रणोदन इस्तेमाल किया जाता है वो है UH-25 ईंधन की तरह और N2O4 ऑक्सीकारक की तरह। इसकी निष्पादक क्षमता थ्रस्ट जनरेटिंग 73.9 टन की होती है और इसका क्रियाकाल 162 सेकंड का होता है। इससे आगे तीसरे चरण में जो HPS-3 चरण कहलाता है, यह उच्च निष्पादन करने वाला एक ठोस नोदन प्रणाली वाला बूस्टर है। इसकी लंबाई करीबन 3.6 मीटर, व्यास 2 मीटर और नोदन भार 7.6 टन का होता है। इसकी थ्रस्ट जनरेटिंग कैपेसिटी 33.5 टन की होती है और इसका क्रियाकाल 123 सेकंड का होता है। चौथा चरण PSLV का या फिर से तरल नोदन पर काम करने वाला होता है। On your screens now you can see the passengers of this particular PSLV C-49 mission. The primary satellite is that of ISRO. It is called EOS-1, whose lift-off weight is 630 kg and it is intended to be placed in 575 kilometers circular orbit with an inclination of 36.9 degrees. The objective of the EOS-1 is Earth observation. Along with the EOS-1, there are 9 co-passenger satellites This is mission director. from
other countries. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C-49 EOS-1 mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range and ISTRAC network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C-49 EOS-01 mission at 15:12 hours IST today, that is 7th of November 2020. On your screens, you have watched Sri S.R. Biju, Calling timing. Project Director PSLV You can lift the hold in the next full and Mission Director of PSLV C-49 EOS-01 mission, giving the clearance and authorizing the launch. The IST time here is 14:54 hours and we are 16 minutes away from the intended launch. The launch time has been revised from 15:02 hours to 15:12 hours IST. जी हाँ, जैसा कि आप अभी देख रहे थे, Hold released. अब काउंटडाउन फिर से शुरू हो चुका है। यहाँ अब निर्णय लिया जा चुका है कि सभी पैरामीटर सामान्य हैं, हम प्रमोशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह अभी अभी आपने देखा, मिशन डायरेक्टर ने अपना अनुमोदन व्हीकल डायरेक्टर को समर्पित किया है। मिशन डायरेक्टर, उपग्रह निदेशक, टेलीमेट्री ट्रैकिंग स्टेशन निदेशक, रेंज ऑपरेशन निदेशक, इन सभी की अनुमोदन के बाद ही अपने अनुमोदन मिशन डायरेक्टर को देते हैं और मिशन डायरेक्टर अपना अनुमोदन व्हीकल डायरेक्टर को समर्पित करता है। Automatic launch sequence started for PSLV C-49 launch. You can see on your screens that based on clearance from Project Director and Mission Director, you can see on your screens Vehicle Director has announced the start of automatic launch sequence. It is about 14 minutes 30 seconds to the launch. From here on, the further activities leading to the launch will be in the autonomous mode by the automatic launch sequence. The major checkout parameters of the launch vehicle and satellite will be taken care by the onboard computers hereafter. जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिखा, मिशन निदेशक ने अपना अनुमोदन व्हीकल यान निदेशक को दे दिया है और यान निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस का अनुमोदन सक्षम कर दिया है। इसके बाद ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस में पूरा अधिकार ऑन बोर्ड कंप्यूटर के पास चला जाता है और उसमें पूर्व निर्धारित तरीके से, पूर्व निर्धारित अनुक्रम के अनुसार वह अपनी परीक्षण शुरू करता है, यान परीक्षण। इस दौरान वह सभी पैरामीटर्स को अपने सामान्य अनुकूल पैरामीटर हैं कि नहीं वो सब चेक करता रहता है और उसके बाद में अपना कोई भी बाधा उत्पन्न होने पर वह यहाँ हम डेटा रिसीव कर रहे हैं और डेटा से पता लग रहा है कि यहाँ ALS सीक्वेंस अच्छी तरह अबाधित रूप से चलता हुआ। As we wait for the launch, let me briefly tell you the flight sequence which will be followed today for the PSLV C-49 mission. The reaction control thrusters are fired 2.8 seconds before the launch. At liftoff, that is at T0, the core stage or the first stage and the two strap-ons will be ignited. The strap-ons will continue to burn for about 70 seconds and then they will be separated from the launch vehicle at 25 kilometers altitude.
The first stage will take the rocket to an altitude of 61 kilometers and impart a velocity of 1.6 kilometers per second. At 109 seconds flight elapsed time, the PS1 will separate and the PS2 is ignited less than a second later. During the PS2 burn regime, 2 flight events take place: the initiation of closed loop guidance and the separation of the heat shield. The total burn time of PS2 is 152 seconds and it is then separated from the ongoing launch vehicle. On your screens now you can see the Director of Satish Dhawan Space Center, Shri A. Rajarajan, sitting next to Chairman ISRO Dr. Shivan. Next to him is Shri S. Somnath, Director Vikram Sarabhai Space Center. Then I was telling you about the flight sequence. After the PS2 burnout, the PS3 stage is ignited, which is burned for another 123 seconds, and then the PS3 is burnt out but continues to coast along. The PS3 separates another 145 seconds later. RCT actuation in progress. 10 seconds later, from the separation of PS3, PS4 stage is ignited. 316 seconds of burn duration of PS4 develops the required orbital conditions for the payloads and injects the primary satellite, followed by co-passenger satellites in the predetermined orbit and sequence. You can see the senior scientists of ISRO looking intently at their monitors, PS2 prime and chain actuation. here you can see the satellite project director, Shri Nadagowda, looking intently at the satellite parameters. Talking about the co-passenger satellites taking a ride in this mission. One is R2 satellite belonging to the Lithuania. It is a technology demonstrator. The Clio satellites, 4 numbers, namely KSM-1A, 1B, 1C and 1D from the Luxembourg, are meant for maritime applications. The Lemur 1, 2, 3 and 4 satellites from Spire Global USA are multi-mission remote sensing satellites. The launch vehicle is controlled by a strapped-down inertial navigation guidance system housed in the vehicle equipment bay that is mounted on the top of 4th stage. Here you can see on your screens the details of the foreign satellites. These are being launched under commercial agreement. The view of various consoles of the Mission Control Center here at SDSC Shar. अब आप अपनी स्क्रीन पर चेयरमैन ISRO डॉक्टर शिवन को देख रहे हैं। कोरोना काल में ये भी पूरी तरह सावधानी बरतते हुए। अब हम प्रमोशन से करीब 8 मिनट 40 सेकंड की दूरी पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर इस दौरान सभी पैरामीटर का बारीकी से निरीक्षण करता हुआ जा रहा है। और इस निरीक्षण के बाद में आखिरी में T0 पर वह खुद ही पायरो इग्निशन की कमांड देगा। Now we are about 8 minutes away from the scheduled launch time. All the senior scientists are carefully observing the launch vehicle, satellite and range related parameters that determine the launch commit criteria. To commit the launch vehicle for a launch, normally benign weather conditions are ensured, whose report is obtained from the dedicated meteorology department of ISRO. In addition, the wind profile is prepared and fed to the onboard computer so that it can give appropriate command to reduce the aerodynamic loads during the ascent phase of the rocket. The debris location has been verified and it is not affecting the path of launch vehicle during its journey to orbit. Notice is given to airmen
for instantaneous impact point trajectory. अब हम T-7 मिनट 10 सेकंड की दूरी पर लॉन्च से अभी आप यहाँ श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सीधा प्रसारण देख रहे हैं। यह दृश्य किसी के लिए भी बहुत ही रोमांच भरा होता है, न सिर्फ दर्शकों के लिए बल्कि यहाँ के अभियंताओं और वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत का परिणाम का भी समय होता है। You can see the PSLV C-49 standing majestically at its launch pad and fully ready for its launch. We are 6 minutes 20 seconds away from the launch time. प्रमोचन यान से जुड़े सभी विकास कार्य इसरो की गुणवत्ता तथा तंत्र विश्वसनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। गुणवत्ता विभाग के वैज्ञानिक अभियंता शुरू से आखिरी तक हर एक गतिविधि की साक्षी बनकर इसकी गुणवत्ता का परीक्षण करते हैं। डिजाइन से लेकर विकसित तंत्र आने तक उनका हर एक चरण पर योगदान रहता है। इससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कार्य त्रुटि के साथ आगे नहीं बढ़ रहा, त्रुटि रहित है। अगर कोई त्रुटि आती भी है तो उसका मिशन पर क्या प्रभाव होगा और उसे कैसे कम किया जा सकता है। इन चरणों का निरीक्षण करने के पश्चात ही इसरो की पुनरीक्षण समिति द्वारा प्रमोचन के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है। As Mr. Vikas has already explained you about the PSLV launch vehicle, let me throw some light on it again. Let me explain about the launch vehicle configuration. It is a PSLV DL mission with alternate solid and liquid stages. F-139 tons of solid propellant in the main booster called PS-1. It consists of 5 segments, approximately 30 tons each, with two 12.2 ton solid strap-on motors alongside the main booster. The core dia is 2.8 meters, thrust 4,800 kilonewtons, action time of 107 seconds approximately, and the strap-on dia is 1 meter and thrust 119 kilonewtons. The second stage of PSLV is based on liquid propulsion system with 41-ton propellant loading of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. The Vikas engine develops 799 kilonewtons of thrust. The third stage of the rocket is called HPS-3. Its height is 3.6 meters, diameter 2 meters, and uses 7.65 tons of propellant. The fourth stage is a liquid stage, which is 2.5 meters in height, 1.34 meters in diameter, and 1.6 tons of propellant loading. Monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer. The satellites are housed inside the payload fairing the heat shield. The overall height of PSLV is 44.4 meters and the gross liftoff weight of PSLV DL is 259 tons. अब हम प्रमोचन से 3 मिनट 8 सेकंड की दूरी पर ऑन बोर्ड कंप्यूटर अबाधित रूप से कार्य करता हुआ -3 minutes. सबसे पहला प्रज्वलन करीबन T-2.8 सेकंड्स पर आप RCT रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर का देख सकेंगे। The IST time is 15:08 hours and we are 2.5 minutes away from the launch.
These are the views from Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center. Views of senior scientists watching intently. -2 minutes. The Mission Control Center conveys in real time all the flight and the launch related parameters that are to be noticed by the senior scientists. जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, PSLV के एक बहुमुखी संरचना वाला यान है। बहुमुखी संरचना से हमारा मतलब है कि इसके कई वर्जन्स, कई संरचनाएं हो सकती हैं, जिसमें कि है PSLV XL, PSLV Core Alone, PSLV DL और PSLV QL। PSLV XL संरचना में 6 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रथम चरण PS1 बूस्टर के साथ संलग्न रहते हैं। कोर अलोन में इनमें एक भी स्ट्रैप-ऑन नहीं होता, सिर्फ PS1 बूस्टर अकेला रहता है। PSLV DL में all sequences are we are 45 seconds away from the scheduled launch time. अब हम कुछ देर शांति ग्रहण करेंगे और आप सभी दर्शक प्रमोशन का आनंद लीजिए। -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. PS2 VSPP open. The special camera is focusing intently on the launch vehicle and the range operations director looking very intently at his monitor. 15 seconds, 12, 11 and 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Plus 5 seconds. You have just launched a majestic liftoff of PSLV C-49 carrying EOS-01 with 9 co-passenger satellites, and the range operations director has confirmed the liftoff and that the performance of PS1 is normal. जी हाँ, अभी आपने देखा प्रमोचन यान का लिफ्ट ऑफ बहुत ही सामान्य तरीके से बढ़ता हुआ और ये गर्जना करता हुआ आकाश में। That is PS1. Its total thrust is 4,800 kilonewtons. It uses solid propellant, HTPB based solid propellant, and alongside there are 2 strap-on boosters. हम यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और अपने अवलोकित पथ पर the altitude and the separated. अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर का घोषणा है यहाँ कि स्ट्रैप-ऑन सेपरेट हो चुका है। P2 change over to SABT2. Now you can see the flight events on your screen. The PS1 has been flowing normally and its performance is normal. The total burn time is about 108 seconds, and then it will be separated from the ongoing vehicle. Stage separated, second stage engine started. अभी Close guidance initiated. Plus 2 minutes. ROD का अभी घोषणा हुई है। उन्होंने बताया फर्स्ट स्टेज सामान्य निष्पादन करता हुआ यान से पृथक हो चुका है और दूसरे चरण का प्रज्वलन हो चुका है। Second stage performance normal. Now that the first stage action time is complete, it has been separated from the ongoing vehicle, and we have seen the confirmation from the range operations director that it has been separated, and you can see on your screens the flight regime of PS2. Payload bed separated. And
The payload fairing has been separated, and as you have already heard, the closed loop guidance has been initiated. Second stage performance normal. अभी अभी आरओडी ने फिर से घोषणा की है कि ऊष्मा कवच का पृथक्कीकरण हो चुका है। अब हमारा यान वायुमंडल से बाहर जा चुका है। The PS2 takes the launch vehicle up to 225 kilometers altitude and increases its relative velocity from 1.6 kilometers per second to 4.3 kilometers per second. Here you can see the time versus relative velocity plot and the flight events. अभी आप एनिमेशन पे देख पा रहे हैं PS2 का सामान्य निष्पादन। PS2 का प्रज्वलन सामान्य होता हुआ अब प्रमोचन यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Now it is about 4 minutes after the launch, and the PSLV stage 2 is performing, and its performance is observed to be normal. It will continue to perform till 261 seconds, which amounts to 4 minutes 21 seconds. अगली घटना PS3 का स्टेज इग्नाइटेड। आरओडी ने अभी घोषणा की PS2 का सफलतापूर्वक पृथक्कीकरण और PS3 का इग्निशन हो चुका है। Stage performance normal. You have just heard the range operations director giving a confirmation that the PS2 stage has been separated, the PS3 stage has been ignited, and its performance is normal. PS3 का क्रियाकाल परफॉर्मेंस नॉर्मल। PS3 का क्रियाकाल करीब 123 सेकंड का होगा। इस तरह यह अपना पूर्ण ज्वलन काल T+385 सेकंड्स पर पूर्ण करेगा। इसके बाद यह बंद होकर PS3, PS4 और सैटेलाइट एक यूनिट बनकर आगे की यात्रा करेंगे। इसे हम कोस्टिंग फेज कहते हैं। The PS3 will burn for 123 seconds. It imparts 295 seconds of specific impulse. This stage is based on HTPB-based propellant in Kevlar motor case. The motor will provide thrust of 33.5 tons to the ongoing launch vehicle. Now we are 5 minutes 55 seconds after the launch time. The PS3 will burn till 6 minutes 25 seconds. अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हम प्रमोचन से 366 सेकंड की दूरी पर सापेक्षिक वेग करीब 6.9 किलोमीटर पर सेकंड का हो चुका है। पृथ्वी से ऊंचाई करीबन 325 किलोमीटर के करीब है। थर्ड स्टेज एक्शन कंप्लीटेड। It is confirmed that the PS3 operation is now completed. The PS3 will not burn anymore but will continue to coast along with the PS4 and the passenger satellites. It will be jettisoned in another 145 seconds. जी हाँ, PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका है। यह करीब 145 सेकंड तक का होगा, जिसमें कि पूर्व प्राप्त वेग के साथ प्रमोचन यान अपनी ऊंचाई प्राप्त करेगा। During the coasting phase, the altitude addition is about 160 kilometers addition, while the relative velocity reduces from 7 to 6.9 kilometers per second. These are the flight parameters, time versus initial velocity, relative velocity plots. The tracking of the ongoing launch vehicle is carried out by ISRO Telemetry Tracking and Command Network, a host of ground stations in the flight path of the mission.
Participating track centers are Sriharikota, Thiruvananthapuram, Port Blair and Yattaraga in Australia. All stations ensure sufficient time overlap so that there will not be any miss in looking to the telemetry data. जी हाँ, इस दौरान हमारे ग्राउंड स्टेशंस टेलीमेट्री के द्वारा यान की सभी पैरामीटर्स प्राप्त करवाते रहते हैं। इसमें 5 टेलीमेट्री स्टेशंस इस बार भाग ले रहे हैं। इन सभी टेलीमेट्री स्टेशंस में पर्याप्त समय का ओवरलैप रहता है ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि कोई भी डेटा लॉस नहीं हो रहा है। अगला इवेंट PS3 सेपरेशन और PS4 इग्निशन का होगा। We are eagerly waiting for the separation of PS3. Stage separated. Yeah, now the confirmation has come that the PS3 has been separated and PS4 is due to ignite in another about 10 4 seconds. engine started. The PS4 ignition also has been confirmed. The PS4 is powered by 2 pump-fed engines burning monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen as oxidizer. 316 seconds of burn duration of PS4 developed the required orbital conditions for the payloads and injects the primary satellites followed by the co-passenger satellites in the predetermined orbit in sequence. अभी आप देख रहे हैं ग्राफ में रेंज और एल्टीट्यूड और ग्राउंड ट्रेस दिखाया जा रहा है। यान अपनी पूर्वानुमानित और अवलोकित पथ को फॉलो करता हुआ परफॉर्मेंस नॉर्मल। आरओडी का अभी अनाउंसमेंट आया है। चतुर्थ चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ। चतुर्थ चरण एमएमएच और मॉन ईंधन का प्रयोग कर 0.76 टन के 2 इंजनों का निष्पादन करता है और इससे PS4 के बाद 7.16 किलोमीटर पर सेकंड की वेग प्राप्त कर ली जाती है। PS4 सामान्य निष्पादन करता हुआ और हमारे उपग्रहों को उसके उद्दिष्ट कक्ष तक ले जाने में सहायक साबित होता हुआ। During the PS4 operation, let me just tell you that the PSLV is the workhorse of ISRO and it has rightfully earned this credit owing to the versatility and adaptability. Let me enumerate a few noteworthy PSLV missions. In the PSLV C-44 mission, the immediate predecessor in a similar launch vehicle configuration, that is PSLV-DL, with 2 strap-ons, was the first time ISRO used the last stage of the rocket as platform to perform experiments in space. The record for largest number of satellites ever launched by a rocket is achieved by PSLV C-37 mission. It had launched 104 satellites. The PS4 restart was experimentally demonstrated in C-29 mission performance normal and functionally executed in the C-34 mission. PSLV is known for the prestigious interplanetary missions, the Mangalyaan or the Mars Orbiter mission in 2013 and the Chandrayaan-01 in 2008, and you can see on your screen Shri P. Kunyikrishnan, Director, UR Rao Satellite Center. PS4 अपने सामान्य निष्पादन देता हुआ अब अगली घटना हमारे मुख्य उपग्रह EOS-1 के सेपरेशन की है, जिसका हम सभी को इंतजार है।
यह घटना करीबन t प्लस 919.2 सेकेंड्स पर होगी। अभी हम 786 सेकेंड्स दूर आ चुके हैं प्रमोशन से। सापेक्षिक गति 7.02 की पहुंच चुकी है। Fourth stage performance normal. There is a confirmation from the Range Operations Director that the PS4 operation is normal. And as I was telling you about the versatility of PSLV, PSLV has been the trusted vehicle for the launch of Indian Regional Navigation Satellite Constellation, NAVIC. So far, 50 PSLV missions are complete, and this is the 51st mission. 37 from the first launch pad and 13 from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. The present launch is the 51st mission of PSLV and the 38th from the first launch pad. It is 13 minutes 51 seconds after the launch, and we are waiting for the PSLV stage 4 burn completion. Plus 14 minutes. आप ग्राफ देखते हुए अब हम बहुत ही करीब हैं अपने सैटेलाइट सेपरेशन से। Stage engine shut off. PS4 को बंद कर दिया गया है। यह सब ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से किया जाता है। अब उपभू दूरी 575 किलोमीटर की प्राप्त कर ली गई है। अभी अभी आरओडी ने अनाउंस किया कि कक्षा के अनुकूल स्थितियां प्राप्त की गई हैं और अब किसी भी समय उपग्रह PS4 से पृथक होकर अपनी कक्षा में अंतःक्षेपित होगा। On your screens, you are able to watch the flight parameters along with the ground trace. The next flight event is the primary satellite separation. UOS 01 satellite separated. Now the jubilant moment on your screens. अभी आप ऑनबोर्ड कंप्यूटर की मदद से ऑनबोर्ड कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं कि EOS 1 का पृथकीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। The EOS-1, the primary satellite of PSLV C-49 mission, has been injected into the orbit, its intended orbit, and the visuals you are getting from the onboard cameras live. जी हाँ, ये पल सभी वैज्ञानिकों के लिए काफी उत्साहवर्धक। That was the separation of the first satellite, and 9 more customer satellites in line for the separation. And PS4 still in orbit, reorienting itself for the further injection events. Not to NAV. Our local, we don't have any connection to NAV right now. So our local. आप ये घटनाक्रम देख पा रहे हैं EOS 1 सेपरेशन। अब आरओडी ने अनाउंस कर दिया है R2 उपग्रह अंतःक्षेपित हो चुका है, अपने निर्धारित कक्षा पर अंतःक्षेपित हो चुका है। The R2 satellite and the Kleos 1A satellite have been separated. R2 is a technology demonstrator satellite from Lithuania, as we have told you earlier. The next flight event is the KSM-1B separation, which is going to take place any time now. These are the visuals from the onboard camera of the launch vehicle. The Mission Control Center, all the scientists are waiting eagerly for the next satellite separation. ESM-1B satellite separated. ESM-1B सैटेलाइट का सफलतापूर्वक अंतःक्षेपण किया गया। Now, the second
KSM satellite, that is the KSM-1B, has also been separated at its intended time into the intended orbit. The KSM satellites, 4 of them are taking a ride in this particular mission. They are from Luxembourg and these are meant for maritime applications. अभी आप अपनी स्क्रीन पर पृथ्वी का विहंगम दृश्य करीब 578 किलोमीटर की ऊंचाई से देखते हुए some 1D satellite separated. The KSM-1B satellite also has been separated as ROD has announced. Now you are watching on your screens a very beautiful and vivid visual of the Earth. Next we stand by for the KSM-1C also has been separated. So all the 4 satellites of the Cleo space have been separated. Now the Lemur satellites one by one they will detach. जी हाँ, KSM-1C को भी यान से पृथक कर अपनी कक्षा में अंतःक्षेपित कर दिया गया है। चारों KSM सैटेलाइट्स अपनी कक्षा पर अंतःक्षेपित। More 2 satellites separate. ROD का अभी अनाउंसमेंट, लेमोर 1 और लेमोर 2 अमेरिका के सैटेलाइट्स सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिए गए हैं। Three satellites separated. जी हाँ, अब लेमोर 3 भी अपने निर्धारित कक्षा पर अंतःक्षेपित। The Lemur satellites are from Spire Global Inc., USA, whose purpose is multi-mission remote sensing. Now we wait eagerly for the last satellite separation of this mission, that is the Lemur 4, which can happen. 4 satellites separated. Now here we have here a successful mission with all the 10 satellites separated and injected into their intended orbit. And all 9 customer satellites into the desired orbits. PSLV C49 EOS-01 mission is fully accomplished. मिशन की सफलतापूर्ण पर सबको शुभकामनाएं देते हुए चेयरमैन ISRO. Chairman ISRO congratulating all the center directors and senior ISRO scientists in the mission control centers. It's a jubilant environment here. सभी अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता को भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। 1 2 3 1 2 3 We have witnessed a successful launch today, another feather in the cap of PSLV and ISRO. The workhorse of ISRO, that is the PSLV, has once again proved its might and added a feather to its cap. Now we take you live to the addressing of Chairman ISRO Dr. K. Shivan and the team, and we take leave from you. Do take care of yourselves. Goodbye. जी हाँ, अब हम Good evening. All my dear friends, today I am extremely happy to declare the PSLV C49 successfully placed Earth Observation Satellite EOS-01 as well as 9 customer satellites precisely into the 575 kilometer orbit. Subsequent to this mission, the satellite started operating its own functions. The solar panel of the satellite also successfully deployed. First of all, let me congratulate now the satellite team, EOS-01 as well as 9 satellites
to take over from now onwards to conduct the rest of their mission life. My dear friends, this mission is very special, very unusual for ISRO. You know, the space activity cannot be done through work from home. Each and every one of the space engineer has to be available in lab, industries, integration area, as well as the field. Then only the activities will go. Especially when we are talking about launch campaign and missions like this, each and every engineer, technician, technical assistant, all the employees have to travel all the way from different centers, and they have to be assembled and work together in SDSC SHAR. At the same time, the various hardware available at the different parts of the country have to be transported carefully to SHAR. Under this COVID pandemic, really ISRO, as per the requirement from national need, the team ISRO, as usual, raised to the occasion, and they worked very carefully with limited staff, at the same time meeting all the protocols outlined by government, and safely they worked, and also without compromising any of the quality. Today's success mainly because of the hard work given by the employees of Team ISRO, and at the same time they are sacrificing their personal interest and work for this particular mission under the COVID pandemic. And really, it is very heartening that their hard work paying the pay for the excellent success whatever we have seen. Let me compliment all the employees across the ISRO centers for carrying out this job with carefully, safely, and doing the quality work. At this time, I wanted to compliment all the center directors. When we have gone through the difficult times regarding the availability of the employees, regarding the safety of the employees, that the directors took care of each and every one of the employees of ISRO. They have taken care of their health. They have defined that the special SOPs to ensure that the works are progressing. At the same time, the employees' health are not getting affected. I must congratulate and compliment all the center directors for taking initiatives and doing this activity to ensure that this mission is a success. My dear friend, as usual, now we have started the mission after the COVID pandemic. Now we have series of missions on our hand. Immediately we are going to have the PSLV C-50 is going to launch that satellite CMS-01. Then we will be having that new vehicle SSLV. It's the first development flight. This is going to launch, that is UOS-02. Subsequently, we are going to have the GSLV F-10 launch. It is going to launch, that is that UOS-03. And I'm sure that under these difficult times, as usual, that the center directors as well as all my employees will work safely, carefully, take care of their health. At the same time, they will be contributing to the nation's needs as usual. I am sure that the team ISRO will always rise to the occasion and meet the requirements as per the demand put on them. And let me once again thank the entire ISRO employees for making this mission a grand success. And also I wish that all the future missions also, they have to make it a success. Let me wish all my employees as well as their family members
for a happy Diwali. It's going to have exactly 1 week from now. And before Diwali itself, we have a successful launch rocket. So definitely you can enjoy more on this one. Let me wish all the best for all my employees as well as their families. Thank you. Jai Hind.